You fake how to do like fake love. I don't Okay, I don't have experience to meet before in a Thai lady in Thailand. $150. know. Maybe not too much. $850. Manager is how much? Maybe 50. 50,000. Oh, very good. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो ये है जी इस हॉस्टल में मेरा रूम। ये सामने वाला जो खुला हुआ है ये मेरा बेड है। तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे टीवी भी है, चार्जिंग का भी पूरा सिस्टम है, लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। जो ऊपर है वहाँ बटन है तो मैं अभी ऑन नहीं कर सकता। तो जी इस तरह किस्म का मेरा रूम है। तो ये है विंडो जो मेरे रूम से बाहर की तरफ इसका इस तरह का व्यू। सब कुछ है। सुबह आपने ही कार्ड बनाया था ना। हाँ, तो ये है जी शावर रूम, और ये शावर वाला अंदर वाला शावर वगैरह। तो इस तरह से ये शावर रूम है। तो ये इस विंडो से बाहर का माहौल है। तो ये है जी टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट वगैरह। अंदर बंदा है तो फिर टाइम मिला तो दिखाऊंगा। ये मेरा रूम है जी। चलते हैं, तैयार होते हैं और निकलते हैं। मुझे जाना है आज एक डेट मारने के लिए। तो चलते हैं, आज आपको वहाँ का माहौल दिखाते हैं। भाई सब कैसे हैं? बढ़िया यार। लिफ्ट वगैरह भी है, लॉकर्स भी हैं। आपका दिखा रहे हैं। टॉप भी है भैया, रूफ टॉप भी है। ऊपर इधर से लिफ्ट से नहीं जा सकते? लिफ्ट से भी जा सकते हैं। जा सकते हैं। यही 6 तला है। चले, तो ये भाई यहाँ का रूफ टॉप है। ये देख सकते हो क्या माहौल है यहाँ का। रूफ टॉप अच्छा बना हुआ है यार। मैं ये जगह रेकमेंड करूँगा आप लोगों को। आप यहाँ आ सकते हो, बहुत प्यारी जगह है। क्या ख्याल है? अच्छी गैदरिंग, अच्छी जगह है चिल करने के लिए। छः फ्लोर का होटल है ये। शूज़ के ऊपर भी नंबर लगे हुए हैं यहाँ पे, कौन से नंबर का आपका शूज़ है। तो भाई साहब ये किचन है। किचन में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो। कमाल की जगह है। मैंने कॉफ़ी पी थी सुबह। ये कॉमन एरिया है, कंप्यूटर भी अगर यूज़ करना चाहो। और ये है भाई स्विमिंग पूल, अगर नहाना चाहो तो ठीक है। टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। ये बाहर का माहौल है। होटल का नाम एच डिस्ट्रिक्ट बुटीक पोश होटल। सो ये है नाम इसका। सुखमवीर एरिया, नाना प्लाजा से 10-12 मिनट की वॉक पे है ये। और ये सामने कॉमन एरिया है और ये बाहर का एरिया है। मेरी बाइक आ गई है। हेलो। तो मैं जा रहा हूँ एक मॉल के अंदर, उसकी प्राइस आएगी मुझे 100। तो एरिया भाई देख लीजिए किस किस्म का एरिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये नाना प्लाजा का एरिया है पूरा। नाइट लाइफ यहाँ पे होती है। तो भाई यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ जो है नाना के नाम से, नाना प्लाज़ा होटल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की हैं। हम बैठे हुए हैं बाइक पे। हेलो।
ट्रैफिक चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा है। मैं बाइक इसलिए लेता हूँ कि बीच बीच में से करके निकल जाते हैं। भाई मैं ये मॉल पहुंच चुका हूँ। एक्वायर, बड़ा मुश्किल सा नाम है यार इसका, पता नहीं कहीं लिखा हुआ भी नहीं नज़र आ रहा। ये नाम है शायद एम स्क्वायर। तो मैं आया हूँ भाई डेट के लिए, किसी से मिलने के लिए। तो थाई लड़की से मिलते हैं आज और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कैसा रहता है। ये एक नया काम है। हेलो, हाउ आर यू? Now you want How's to eat? everything? Yeah. So you're the Buddhist, right? And Buddhists don't eat meat? They eat, but I not. Ah, you don't eat. Only one eat seafood, or you want seafood? Up Can to you. Yeah, that's better also. But seafood pizza I did not try before. Yeah, I Or- think. Or this one? No, this one. Coconut, no. Ham, sausage, no sausage. Salami. Let's go with this. Yeah, This okay? yeah. For you it's okay? Yeah, that's fine. Yeah, I think that's good. तो भाई साहब इनसे मिलने के लिए आए हैं। Say your name. Neck. नेक वंस अगेन। हम लोग मिले थे कोलेन आइलैंड, राइट? तो अभी जाने से पहले इन्होंने कहा था आ जाएं तो गपशप हो जाए। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, इनसे थोड़े सवाल जवाब करेंगे। I think she will come. Water? फॉर मी वाटर इज़ बेटर। Some water. up for you up, Yeah. because I eat too much sweets and drinks, like Coke. I drink a lot of Coke, I don't want. so don't I like just Coca-Cola. want to control myself now. Sweet and Coke I drink a lot in this 2 weeks. So last night I decided no more chocolates, no more Coke, stop. Yeah, no more sweets. I think somebody else will handle. Yeah, she's coming now. So hello. One beetroot car. And then right pizza, not pizza. Sorry. You will not eat that seafood? I can. Okay, all right. Pizza. And water. Are you from Thailand? Yeah. Thai, sorry? Thai British? Okay, because your accent is different. That's why. Big one. And you can choose what you want. Oh, more than enough. Thank you. It's more than enough. So, I just want to ask you a few questions if you don't mind. You're working in a bar, right? Yeah. How many hours is your duty? Oh, we start 3, but prepare everything for start work at 5. Or we open until today 1:30. Today 1:30. Yeah. Okay. Friday and Saturday finish 1:30, and then when we clear everything, finish around 2:30, maybe. 2.5. Yeah, maybe 3, maybe 2:30. Okay. It's not every day, yeah. But we go home late every day. Right. So it's like We have 3 bar up there. The 46 floor, 44 we have 2 bar. The paper paint they have like a light stand, and it's like it's another bar. It's like a quiet bar. It's for like luxury bar, and then for up there is rooftop bar. I think you're gonna go last night. I'm waiting you, but I think you gonna not come or the next time. Don't worry. actually for me, I'm always sleeping early. Yeah. I mean, for example,
9-10 o'clock I sleep and I wake up like 5 or 6 like that. That's my routine. So before I was out of my routine, so it took a long time to change. So I don't want to change it. That's what I'm trying. And then in the morning, what are you doing? Walk, jogging, like a 2 hours. The room from the hotel is good. That's very nice. I like it. So how many hours you work, guys, here? Like 8 hours, 10 hours, Maybe 12, 12. 12 hours. And it's paid by hour or it's paid by a month? How it works? Month. Month. Okay. So what is the minimum and maximum salary here for Thai people? Thai people more than For example, like 30 up. 30,000. 30,000 up. Yeah. In this bar. 30,000 per month, right? And how many days off? 2 per week. 2 Two- per week. two- 8 day. 8 day. So 1 per month. 6 day per month. 1 week, 1 off, right? 1 week, 2. 2 off. Yeah, I'm off Sunday, Monday. Sunday, Monday off. Yeah. And you work like 22 days, huh? Yeah. 8 days off and Last month or in Jan, I'm without pay, no salary, not work, travel only. so it's 30,000 or 13,000? 30. 30. More. More also, huh? Yeah. Like for example, in this restaurant, how much will be the salary here? Maybe More more than- than. But they busy all the time. It's Oh. like a good area for the Good couple. area, okay. But they have many people in the night time. Hmm. Maybe they call around 10 or 11. They open in the morning also. Morning Right. Yeah, to it's a night. coffee shop also, yeah. Yeah, they have many things. It's a big 30,000, it's a restaurant. quite. They have like many bar in Thailand here, like the many shops have like a franchise or something like that. 30,000 is a good salary. I No? think it's not. It like for the hotel they good more than somewhere. It like they have service charge, right? For the Yeah. hotel they have service charge. They have salary. They have tip. 30,000 baht to USD. Not too much. $850. Maybe not too much. $850. It's Some not. people they enough, but for me not because I'm pay money. Ah, I'm okay. shopping a lot. I like to shopping. राइट 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 तो भाई 850 यहाँ पे जो सैलरी है वेटरस की है तो बाकी so what about like if somebody working in a good job like a manager yeah. how much will be for them? Okay, in your bar manager is how much? Maybe 50 50,000. Oh, very good. like that. It's- Include tax, include service charge already. Include service charges. Maybe I think, but we didn't ask them. Cannot ask about salary Ah, in my company. राइट तो भाई तकरीबन मैनेजर की सैलरी जो है वो तकरीबन यहाँ पे बन जाती है $1,400 तो मेरे ख्याल में क्वाइट गुड है अगर आप कंपेयर करें दुबई से तो ये ज़्यादा अच्छी है इट्स अ सी फूड सैलड Beetroot salad. Huh? Beetroot. बीजू Beetroot. Be बीबरूस yeah. Vegetable. वेजिटेबल Yeah. ओके तो भाई ये सैलड है यहाँ का पानी है और ब्रेड है और ऑलिव ऑयल भाई ये है सी फूड पिज़्ज़ा You fake how to do like fake love. I don't know. Okay, I want to ask you what is the true. Okay, no, that's not a good. I don't want to ask you that. I don't know. I can. No, I mean, I just want to say that. Yeah. Okay, what Thai lady want in a man? I don't know. If for me, I want like they can support me. They can take care of me. They can love me. Yeah, not only love, money and love together, huh? Yeah. Ah, okay. I mean,
you think all the Thai ladies they want money and love together, right? Not only even in Thai, maybe in all over the world, but mostly in because I don't have experience to meet before in a Thai lady in Thailand anywhere. I came many times, but I don't have experience to go for a date or go for a lunch or dinner or coffee date or something. I don't try that in my life You before. can try. So If you want to know, you can try. yeah, I try with It's you good. already. It's good. You can continue. Like it's not good. You can change. It's easy. Right. Yeah. But I think the Thai ladies like more Western guys like UK, USA, Not at all. European. No, No. that's not true. Yeah. Are you sure? Maybe it's me. It's not. No, no. I mean, of course, if something you are saying, something you are saying, you are also from Thailand. So it's mean everybody is not like that. Yeah. Yeah. I think so. The most important thing, guys, if you are a rich Thai lady, you can catch it. Yes. But take care her also, right? Yeah. Love. Money with love. Not true love only. No money, no honey in Thailand. Okay? Exactly. Right? तो भाई इनके कहने का मतलब ये है कि भाई ये खाली प्यार क्या होता है? प्यार वो है जहाँ पे पैसा भी हो और प्यार भी हो. तो प्यार खाली प्यार से पेट तो नहीं भरता. अगर आप खाली प्यार देखते रहेंगे तो फिर तो ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे. तो बेहतर है पहले पैसे कमाओ फिर लड़की देखो दुनिया में कहीं भी. ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है. तो ये जो वीडियो है इसको यहीं ख़त्म करते हैं. गाँव में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. लव यू गाइस. बाय बाय. से बाय बाय फ्रॉम थाईलैंड. से लिटिल बिट लाउड. Bye bye ค่ะ बाय बाय. हाउ इज़ बाय बाय इन ลา थाईलैंड? ก่อน हाँ ลาก่อน लाको. ลาก่อน โอเค ลาก่อนค่ะ แล้วเจอกันใหม่ It's like see you later like next time to see something like that Thank you so much. Appreciate for your time and your kindness. You are a really good girl. We just met on a coffee shop and then we become very good friend, I think. It's our second meeting, but we have a good friendship, I think. Right or wrong? All right, guys. Chill. Bye.